अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अभी आप लोगों ने देखा कि एक साइड मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर बिफोर डूइंग आवर आई मेकअप एंड एक साइड मैंने ट्राई किया बिना कंसीलर के आई शेडो लगाना। आप लोग देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आने वाला है हमारा कंसीलर यूज़ करने के बाद एंड कंसीलर ना यूज़ करने के बाद। तो आपको रिज़ल्ट दिखा ही है, अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट। So let's start. Firstly, I'm applying concealer on the eyes. अच्छे से कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप लोगों को अपने शेड से थोड़ा सा 2 शेड आप लेना है कंसीलर, देन उसको एक अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना है। After blending very properly on the eyes, now we will start our eye makeup. पहले हम लोग बहुत ही लाइट शेड उठाएंगे अपने आई पैलेट से, देन हम लोग अपनी आई लिड पे अप्लाई करेंगे उसे। बिफोर अप्लाइंग आई शेडो हम लोग उसे रफली पाउडर से थोड़ा सा सेट कर देंगे। हमारे कंसीलर पे हमारा आई शेडो डायरेक्टली स्टिक ना हो जाए, इसलिए हम लोग पाउडर से थोड़ा सा उसे सेटअप कर देंगे लाइक दिस। You can use a pizza puff or a brush for applying a powder on the eyelid, and after that we are taking our eye palette like this and applying the lighter shade on the crease line. Please dust off your brush. थोड़ा सा लाइटर शेड अप्लाई करने के बाद वी विल गो टू आवर आई पैलेट एंड apply the next eyeshadow, that is the medium tone eyeshadow. उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे मीडियम टोन eyeshadow को, क्योंकि वो लाइट से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा लाइक मीडियम में आ जाएगा वो। उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम लोग अपनी आईलिड पे और ऊपर वाले के साथ मर्ज करेंगे। Please like, subscribe and share my videos to others if you like them. And now I'm merging the 2 eyeshadows that I had taken earlier. So this is the little secret about eye makeup, that आप जितना अच्छा अपना आई मेकअप ब्लेंड करोगे, आप अपने कलर्स को ब्लेंड करोगे, उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। देन आई एम टेकिंग सम अमाउंट ऑफ डार्क आई शेडो एंड merging it on our eyes. Very properly I'm merging my eyeshadows so it will look good. So you can see the difference and the color of the eyeshadow on my eye like I'm doing here. I'm blending it very properly so my colors will be enhanced more. Now I'm taking some amount of brown shade or dark shade of eyeshadow and blending it with the other colors on my eye. See, I'm doing the
darker color on the outer corner of our eye. So you can see the color and the difference after using concealer and before using concealer. If you use concealer, so your eye makeup base will be good and your colors will be more enhanced, and if you do not use, so it will look bad and colors will be dim. सो आप लोग देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। हम लोग थोड़ा सा अब ये जो गैप बचा हुआ है इसमें थोड़ा सा शिमरी शेड लेंगे और थोड़ा सा फर्स्टली हम लोग ब्राउन शेड से थोड़ा सा अपना आउटर कॉर्नर इन्हांस करेंगे। हम लोग अपनी आई पैलेट फिर से उठाएंगे, थोड़ा सा जो गैप बचा है उसमें शिमर अप्लाई करेंगे। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू आईज। एक साइड मैंने कंसीलर अप्लाई किया था, फिर मेकअप किया जो अभी कर रही हूँ, और इससे पहले आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे मैंने वहाँ पे कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया है, पर अब डिफरेंस आपको खुद नज़र आ रहा होगा। So this is why concealer is very important before applying your eye makeup or eyeshadows. ब्रश से थोड़ा सा उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद वी विल यूज़ द नेक्स्ट शिमर एंड अप्लाई इट विद अ फिंगर। फिंगर से बहुत ही अच्छा ग्लिटर इन शिमर लगता है। So I am applying with my finger. So now you can see the look of our first eye makeup and the second eye makeup before and after using concealer. सो मैं भी आपको एक ये ब्रश दिखा रही हूँ। तो इस ब्रश से वी विल यूज़ दिस ब्रश ऑन द इनर कॉर्नर पे जो हम लोग हाईलाइट करते हैं एरिया, तो वो हाईलाइट करने के लिए हम लोग ये ऐसा थिन सा ब्रश लेते हैं, उससे इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करते हैं। बिकॉज वी कांट यूज़ द thick brush on our inner corner, so we will use this brush. Then I am using the eyeliner, the last step of our eye makeup. So eyeliner हम आपको जैसा सूट करे, जैसा अच्छा लगे आप ऐसा लगा सकते हो। There are many types of eyeliners we have, so आप कैसे भी eyeliner लगा सकते हो अपने आई लुक पे।
So please like, subscribe and share my videos to others if you like my videos, and please subscribe my channel also. I'm applying the eyeliner very roughly. मेन मुझे आपको बस कंसीलर का इम्पोर्टेंस बताना था, सो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया बहुत ही मेहनत से। तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग, इफ़ यू डोंट नो अबाउट मेकअप, सो प्लीज़ डू कमेंट। वन मोर स्टेप जो कि मेकअप आर्टिस्ट करते हैं वो है अपने आइज़ की नीचे वाले हिस्से को अच्छे से ब्लेंड करना, स्मज करना विद अ काजल एंड आई शेडो। सो इसको करने से क्या होता है कि आपकी आइज़ थोड़ी बिग लगती हैं और नेचुरल लगती हैं। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे काजल भी अप्लाई करके दिखा दिया है। मैंने यहाँ पे काजल बाद में लगाया है, आप लोग पहले काजल लगा के देन उसके बाद आई शेडो के साथ उसे स्मज कर देंगे अच्छे से। ये हो गई हमारी आई मेकअप तैयार अच्छे से, एकदम सिंपल बेसिक। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। थैंक यू सो मच।